Hey everyone, I hope everyone is doing fine. So today we are starting off with chemical bonding and in which we'll discuss ionic, covalent and metallic bonding. Before starting, what is a chemical bonding? So a chemical bond is a lasting attraction between ions, atoms or molecules that enables the formation of chemical compounds. So we'll start off first with ionic bonding, but before that we need to know what is an ion and when it is formed. So ions definition of ions that when atom loses or gains electrons, they form ions. So why atom form ions, or why does an atom share ions? Why? Because they need to gain stability. They need to gain stability by completing their duplet or octet. By completing their डुप्लेट और ऑक्टेट. तो डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है? डुप्लेट है जब उनकी आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर 8 शेल्स पूरे हो जाएं. ठीक है, बेसिकली वो क्या होते हैं, उन्होंने अपने आउटमोस्ट शेल को स्टेबल करना होता है. तो या तो वो डुप्लेट फॉर्म करते हैं जो होते हैं 2 से, जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक होता है ऑक्टेट जिसके आखिरी शेल के अंदर 8 होते हैं. मोस्टली ऑक्टेट होता है, लेकिन डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर टू गेन स्टेबिलिटी. तभी आयंस हम लोग फॉर्म होते हैं, तभी गेन या लॉस, या तभी एटम आयंस देता है, तभी एक एलिमेंट आयंस देता है या लेता है, गेन या लॉस करता है. क्यों करता है? टू फॉर्म स्टेबिलिटी. ठीक है, सो वी नीड टू गेट दैट क्लियर बिफोर स्टार्टिंग. अब आयंस के अंदर हमारे पास दो टाइप की चीजें होती हैं. वी नीड टू नो ऑफ दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयंस. Okay, so when an atom loses electron, it forms cations, and when an atom gains electron, it forms anions. Okay, so when it loses electron, it is cation, and when it gains electron, it is anion. So cations is when an atom loses electron, and anion is when an atom gains electron. And always remember that cations are always metal. Metal always loses electrons, and non-metal always gain electron. Non-metal always gains electron. Okay? So now we can move on to ionic bonding, because we need to get this clear. We need to understand ions before we start ionic bonding. Alright, so ionic bonding, let's start. अगर किसी ने पूछ लिया कि what is ionic bonding or define ionic bonding, so when we say define, we will always use the definition that the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. This is our definition, that the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions is our ionic bonding between oppositely charged ions. And if our examiner asks you that how is it formed, so the formation of ionic bonding is that it is the complete transfer of electron from one atom to another, from metal to non-metal. So it is the complete transfer of electrons
from metal to non-metal. This is a note you have to remember, that ionic bonds are always formed between metal and non-metal. So it's just a tip for you guys that समझ लो, याद रखो, जब ग्रुप 1, 2, 3 reacts या combines with group 5, 6, 7 के elements, it is our ionic bonding. 1, 2, 3 के हमारे पास क्या होते हैं? They are metal. And 5, 6, 7 हमारे पास क्या होते हैं? नॉन मेटल. सो जब ये दो रिएक्ट करते हैं आपस में या कंबाइन होते हैं, सो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं. और हमेशा याद रखो, आयोनिक बॉन्डिंग क्या? इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, that it is the complete transfer of electrons. You always have to remember that it is the complete transfer of electrons. There is no sharing. Understand? There is no sharing. All right, now we are done with what is ions. We know that अगर definition का पूछेगा, so we'll say the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions, and when it is asked how is it formed, we say it is a complete transfer of electron from metal to non-metal. Okay, now properties of ionic bonding. Now we will discuss our properties of ionic bonding. Okay, so number 1, they form ionic crystal lattice, which is the structure. So they form ionic crystal lattice, which is basically our structure in which particles, atoms, ions, whatsoever, atoms, ions are arranged in a regular pattern and is in order. This is a very important line, and all these properties are very important. You need to know them as they are frequently tested, in which particles, atoms, ions are arranged in a regular manner, or are arranged in a regular pattern and they are in order. Pattern and in order. Alright. Number 2, ionic compounds are solid at room temperature, which are ionic compounds are solid at room temperature and pressure. RTP is room temperature and pressure. Now, let me fix the P. Yep, room temperature, ठीक है? And they are hard and brittle. Okay, so we need to know that why are they hard and brittle? Because it can be tested. So why are they hard? So they are hard because a large amount of energy is required to overcome the strong electrostatic forces of attraction between the cations and the anions. A large amount of energy is required to overcome the strong electrostatic forces of attraction between cations and anions. This chemical bonding is a very easy chapter, but we have to memorize the properties and we need to know how we draw it. The dot and cross diagrams and everything, we'll come to that later. Okay, so we know why is it hard, because a large amount of energy is required to overcome these strong electrostatic forces of attraction.
between the cations and the anions, or between the oppositely charged ions. Brittle kya? Why are they brittle? Because when large enough force is applied, the layers of ions can slide over each other. This is important, that when large enough, or when sufficient energy, when large enough or when sufficient force is applied, the layers of ions can slide over each other. ठीक है? That's why they're hard and brittle at RTP. इसका ये मतलब होता है. ठीक है? Okay, so third property, ionic compounds have high melting and boiling point. Have high melting and boiling points because reason same है, because of strong electrostatic please अपने नोट में पूरा लिखें, strong electrostatic forces of attraction. So large amount of energy is required to overcome these forces. तभी हमें ज़्यादा melting point इसलिए ज़्यादा है because we need ज़्यादा हमें heat supply करनी है, ताकि to overcome the strong electrostatic forces of attraction हमें large amount of energy required to overcome these forces. That this is why we have high melting and boiling point. Okay, so is required to overcome these forces of attractions. Okay, इसका एक note लिख लें, एक note which is important. So keep a note to yourself that at room temperature and pressure, at RTP, the energy is not sufficient from the surrounding. At RTP, the energy is not sufficient or is insufficient from the surrounding. ठीक है, from the surrounding. ठीक है, अब ये क्यों है from the surrounding energy insufficient? का क्या मतलब है कि यार they are non volatile. ठीक है, they are non volatile क्या है कि volatile क्या होता है? ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी है. volatile क्या होता है कि which can evaporate at room temperature and pressure. Non volatile क्या होता है that they cannot evaporate in room RTP as the energy present in room temperature and pressure is not sufficient to overcome strong electrostatic forces of attraction, hence they are non volatile. तो ये जो नोट है ना, hence non volatile, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो यही आ रही है. तो नोट अपने पास याद रख लें. At RTB, the energy is insufficient from the surrounding, hence non-volatile. Non-volatile क्या होता है कि they cannot evaporate at room temperature. ठीक है, अगली चीज, this is another important property. अगली चीज, that at solid state, ionic compounds do not conduct electricity. This is a very important point. Do not conduct electricity. Why? Because of no free moving ions, not electrons, because of no free moving ions. This is important, please yaad rakhna, this is free moving ions because they have no free moving ions. However, they conduct electricity in aqueous or molten state. क्यों करते हैं? Because then they have
free moving ions. ठीक है, this is an important, okay, and then our last is that they are non volatile. दे आर नॉन वोलेटाइल, हमने बता दिए क्यों होते हैं नॉन वोलेटाइल, क्या होता है, सारी डिस्कशन हमने कर लिया. दे आर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, एंड दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर. दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल इन वाटर. तो इधर हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, हमने आयंस क्या होते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन, हाउ इज इट फॉर्म्ड, यहाँ तक पढ़ लिया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज आवर डॉट एंड क्रॉस, या हाउ टू ड्रॉ इट. ठीक है, सो डॉट एंड क्रॉस वगैरह हम लोग ने अब करना है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ सम. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर कह दे कि NaCl इज ए आयोनिक कंपाउंड, सोडियम क्या है, मेटल, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल. सो इन्होंने रिएक्ट किया, Na+Cl विल फॉर्म NaCl. ठीक है, अब NaCl ड्रॉ करना है. सो व्हाट वी विल डू इज देखो हमारे पास एग्जाम में दो किस्म से आ सकते हैं. या तो हमें कहेंगे कि कंप्लीट ड्रॉ करो, या हमें कहेगा डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करो. तो डॉट एंड क्रॉस के अंदर हम लोग खाली डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करो जो, ठीक है, कंप्लीट. और या तो हमारे पास होगा कि वैलेंस शेल का सिर्फ ड्रॉ करो, या तो हमें कहेगा आउटर मोस्ट शेल से ड्रॉ कर दो, वैलेंस शेल से ड्रॉ कर दो. देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए फाइनल वो शो कर दो. ठीक है, तो मैं दोनों सिखाऊंगा, इट्स वेरी इजी. ठीक है, ओके. अब सोडियम के अंदर, अच्छा सबसे पहले चीज, आई होप अगर आप लोगों ने पहले बॉन्डिंग से पहले वाली चीजें पढ़ी हुई हैं, सो यू नो दैट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो सोडियम का क्या है, हम इसकी पीरियोडिक टेबल दिया होता है एग्जाम में, यू कैन लुक इट फ्रॉम देयर, इट्स 281. एंड क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का है 287. अब होगा क्या, ये जो 1 है ना, ये इधर चला जाएगा. अब होगा क्या इससे, मैंने आपको क्या कहा था, आयंस गेन या लूज क्यों करते हैं, सॉरी आयंस मतलब बनते क्यों, वेयर दे फॉर्म्ड. तो हम लोग ने क्या कहा था, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट. अब इधर देखिए 1 चला जाएगा, तो 2 और 8 पर 1 था ना, 281, तो 8 इसका फाइनल आउटमोस्ट शेल बन जाएगा और ये स्टेबलाइज हो जाएगा. सिमिलरली 287 कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्लोरीन को, 1, तो इधर चला जाएगा. तो होगा क्या, क्लोरीन एक गेन कर लेगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ किस तरह करना है, इट्स क्वाइट सिंपल. पहले हम सोडियम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम है. ठीक है, अब मैं डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो डॉट एंड क्रॉस के अंदर हम लोग ये देखो, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यार हम लोग सोडियम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोरीन को क्रॉस से करेंगे. ये उसके ऊपर हम लोग एक फाइनल शेल बनाएंगे. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then we'll draw one more. ठीक है, again you have to draw with precision. मैं इधर ऐसे ही draw कर रहा हूँ because I am using a tablet and a pen, so I cannot draw precisely, लेकिन आप पेंसिल के साथ या पेन के साथ properly draw कर सकते हैं. Over here we have chlorine. We'll use cross in this. ये कितना होगा, 2 and 8, and then we'll draw another shell. ये तब की बात करूँ अगर हमें कहेंगे यार आपने दोनों चीज़ें ड्रॉ करनी है, मतलब पूरा कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना है, तो हम कहेंगे अच्छा 2 3 4 5 6 and 7, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया. देन वी विल ड्रॉ आवर फाइनल क्या कहते हैं डायग्राम. अब होगा क्या, ये है ना रेड वाला, दिस विल गो ओवर हियर. ठीक है, हमें ये पता चल गया. तो अब हम पहले ये करेंगे,
एंड देन विल ड्रॉ फाइनल वन, और हमेशा याद रखना है हम फाइनल वन हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर ड्रॉ करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ड्रॉ करते हैं, और हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो हम कहेंगे सोडियम है 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट बंद किए, इसका चार्ज लिख दिया, हाउ मच इट। देखो क्या टाइम्स क्या होते हैं, क्या टाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था क्या टाइम्स क्या होते हैं। दे आर व्हेन इट loses an electron, ठीक है, when an atom loses an electron it forms cations, and when an atom gains an electron, तो cations हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे सोडियम का पॉजिटिव है और इसने कितना लूज किया 1, तो हम सिर्फ प्लस लिख देंगे, वी वोंट राइट +1 +2 +3, हम सिर्फ प्लस लिखेंगे। देन ओवर देयर हम लोग क्लोरीन ड्रॉ करेंगे, ओके X2 oops all right, so we'll draw this and then we'll draw this. Right, so 1 2 3 4 5 6 7, and then we'll draw one dot of red just to identify कि यार ये हमारे पास यहाँ से इसने गेन किया, एंड देन ब्रैकेट्स पुट करेंगे और इसका चार्ज देख लेंगे, इट गेन्ड 1, सो नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एग्जाम में अगर कभी आ जाए ना कि यार क्लोरीन के आपने क्लोरीन के आपने क्या कहते हैं 2 बनाने हैं शेल्स, ठीक है, तो आप पता क्या करोगे, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके अंदर हमने 2 क्लोरीन्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, या तो आप क्लोरीन का अलग शेल बना सकते हो या तो आप उसके पीछे 2 लिख दोगे, क्या ये 2 क्लोरीन है, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर, सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करे तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करवा दोगे, ठीक है। सो इट्स क्वाइट सिंपल, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोवेलेंट बॉन्डिंग. Our next thing is our covalent bonding.